हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यासा एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करेंगे वक्र शनि के बारे में। देखिए, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर, और आज मेरी चर्चा स्पेसिफिकली वक्र रेट्रोग्रेड शनि के बारे में रहने वाली है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वक्र का मतलब क्या है, रेट्रोग्रेड का मतलब क्या है? अगर हम वक्र के ऐतिहासिक स्क्रिप्चुरल मीनिंग की तरफ जाएं तो वक्र का मतलब होता है कर्व। ओके, जब भी ग्रह वक्री होता है वो दो कंडीशंस होता है। एक तो वो एक कर्व में आता है while it is crossing, or when the earth is crossing that graha, and that graha is very close, वो धरती के बहुत क्लोज होता है। शनि की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शनि अगर आपकी कुंडली में वक्र है तो ये एक बहुत सीरियस चीज है। इट इज वेरी सीरियस। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। बृहस्पति वक्र, मंगल, शुक्र, जब ये ग्रह वक्री, इवन बुध जब ये वक्री हो जाते हैं तो लाइफ के अंदर इनकी सिग्निफिकेंस बहुत बढ़ जाती है। अब नजदीक आया धरती के, जब आपका जन्म हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है ज्योतिष, दिस वाज एस्ट्रोनॉमी जो मैंने अभी आपको बताई। एस्ट्रोलॉजिकली इसका मतलब ये है कि समवेयर डाउन द लाइन आपने पिछले जन्म में, जहां पर भी शनि आपका वक्री है, यू वर एक्सट्रीमली केयरलेस। आप बिल्कुल केयरलेस थे। आपने पिछले जन्म में ध्यान नहीं दिया उन तत्वों के ऊपर, उन कार्यों के ऊपर जिसके कारण एक पर्टिकुलर ग्रह वक्री होता है। मैं आपको बहुत संक्षेप में एग्जाम्पल्स के साथ ये चीज समझाऊंगा। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मान लीजिए कि एक क्लास चल रही है, उसमें 10 बच्चे हैं। उन 10 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा। एक बच्चा ऐसा है जिसका ध्यान कहीं और है। ही इज फिजिकली प्रेजेंट बट मेंटली वो प्रेजेंट नहीं है। ही इज नॉट मेंटली प्रेजेंट इन अ क्लास। व्हाट विल द टीचर डू? टीचर क्या करेगा वहां पर? टीचर उस बच्चे के पास जाकर खड़ा हो जाएगा और देखेगा कि वो क्या कर रहा है, पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा, कुछ और तो नहीं कर रहा। So that teacher will be very closely standing near that child, near that student. समझ में आई बात आपको कि पिछले जन्म में आप नॉन सीरियस थे about few things. Now you will get serious, extremely serious. And why? Because of a particular planet, एक planet की वजह से। जब आप ओवरली सीरियस हो जाते हो किसी चीज के लिए तो आप उस चीज के लिए ऑब्सेसिव हो जाते हो। ये बात याद रखना, इसको बाद में समझाऊंगा मैं। अब टीचर बिल्कुल सिर पे खड़ा है। मान लीजिए कि अगर आप एग्जाम भी लिख रहे हैं और टीचर बिल्कुल आपके सिर पे खड़ा है, तो आप सोचिए अपना हाल कि एक तो आप नर्वस हो जाएंगे, एक हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए, हो सकता है कि आपकी जो पर्सनल स्पेस है वो बिल्कुल इन्वेड हो जाए, which will cause lot of frustration, lot of frustration. So अगर शनि कर्म का कारक है, natural lord of the 10th and the 11th house, ऐसे circumstances में आपको डबल, जैसे शनि मेहनत करवाता है 100%, रेट्रोग्रेड शनि आपसे 500% मेहनत करवाता है। और अगर आप ऑब्सेसिवली मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, आप बहुत सीरियस ट्रबल में हैं।
It is going to cause problems in your कुंडली. हर एक घर के बारे में बात करेंगे. बहुत यूनिक एक्सप्लेनेशन मैंने दी है यहाँ पर और रिसर्च की है बेस्ड ऑन द हॉरोस्कोप्स, द कंसल्टेशंस आई एम गिविंग एवरी डे. देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, रेट्रोग्रेड शनि is the most strict and most rewarding ग्रह. ये इंसान को रंक को राजा बना सकता है, इंसान से शैतान बना सकता है. जितनी भी रोड रेजेस होती है ना, ये शनि के कारण होती है. मैं आपको किसी दिन समझाऊंगा इसके बारे में. व्हेन यू फील इनसिक्योर कि कोई आपके आगे निकल जाए उससे पहले मैं आगे निकल जाऊं, ये शनि करवाता है आपसे. दिस इज व्हाट सैटर्न डज. एंड देन दैट इनसिक्योरिटी में जो कलेश होता है, जो झगड़ा होता है, that is caused by Saturn, that is not caused by Mars. Now हम शनि रेट्रोग्रेड की बात कर रहे हैं. Saturn is retrograde means in whichever house it is sitting, उस हाउस के बारे में कुछ स्ट्रेंज है, उस हाउस के बारे में कुछ डिफरेंट है, उस हाउस के बारे में कैसे एनालाइज करना है, कैसे प्रिडिक्शन करनी है, मैं आपको आज बताता हूं. तो सबसे पहले एक हॉरोस्कोप बना लेते हैं और ब्लू कलर का हॉरोस्कोप आज हम यहाँ पर बनाएंगे. छोटा सा आपको एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन आपको दूंगा. इसमें आपको एक फॉर्मूला, एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने इसको मास्टर किया है. मास्टर तो आप कर ही नहीं सकते किसी चीज को, इसको लर्न किया है. आई एम स्टिल लर्निंग. ओके, so when I say master, it is nobody's master, right? You can learn whole your life. I'm still learning, but I've learned a lot, okay, with this technique. इसमें मान लीजिए ये जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1 2 3 4, ये राशियां नहीं है, ये घर है. और ये जो मैं प्रिडिक्शन आपको देने वाला हूं, it is irrespective of what sign the retrograde Saturn is sitting, what नक्षत्र it is sitting. क्योंकि जब हम साइन और नक्षत्रों में जाएंगे तो बहुत डीप मीनिंग उसका निकलेगा. मान लीजिए सैटर्न लगन में रेट्रोग्रेड है किसी के, what will happen? Rule number 1. Rule number 1 is आपको ये देखना है कि आपका सैटर्न कौन से घर से 12वें स्थान पे बैठा है. Rule number 1. So this Saturn is sitting 12th from the second house. अगर हम सेकेंड हाउस से 12 घर गिने तो सैटर्न यहां आ गया. What is second house? Second house is house of family, your communication, your taste buds, कुटुंब, आपका धन, फिक्स्ड एसेट्स. नाउ आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सर there is something strange in your family, there is something strange in your communication, there is something strange about your wealth generation. और अगर आपका लग्नेश अच्छा नहीं है, लग्नेश अस्त है, वीक है, बहुत कम डिग्री का है, तो मैंने ये कॉम्बिनेशन ऑटिस्टिक बच्चों में भी देखा है. The children were autistic because you know what happened was that in the past life you were not serious about going inside. You know what is an autistic child actually? Autistic child का मतलब है that person is disconnected from the outside, that person is all within himself. He's not mingling with the outside world. He's incapable for the outside world. He is inside.
कभी भी आप किसी ऑटिस्टिक बच्चे ने अगर आपको दुआ दे दी तो उसको भगवान भी नहीं रोक सकता. Now what happens? The family has something strange if there is an autistic child in the family. You will call it little strange because it is not normal. People start calling it abnormal, which is a wrong word. I mean, the right word is there is something special about that family. There's something special about that house. So that is why that child can be a special child. That's the right word. You will lose confidence. There will be something strange about your property. सेकेंड हाउस इज योर फिक्स्ड एसेट्स. आपके पास प्रॉपर्टी होगी, आपने सारी जिंदगी माँ बाप की सेवा की, उस प्रॉपर्टी को इवेंचुअली आपको था कि आपके नाम पे जाएगी, लेकिन आपको रियलाइज हुआ कि वो सारी प्रॉपर्टी माँ बाप ने बहनों को दे दी या उसकी डिवीजन प्रॉपर नहीं हुई. मे बी अ फैक्ट्री जिसमें आपने सारी जिंदगी काम किया, वो आपको आपसे उठा के किसी और को दे दिया. बिकॉज फिक्स सेकेंड हाउस से फर्स्ट हाउस में सैटर्न रेट्रोग्रेड था, 12th फ्रॉम इटसेल्फ. आपको संघर्ष करवा रहा है अपने ऊपर. आप अपने लिए पर्सनली अपने लिए कुछ बना नहीं पा रहे, जिसके कारण आप ऑब्सेसिव हो रहे हैं. आपकी लोग मदद नहीं कर रहे पर्सनल लेवल पे, आपके लिए लोग मदद नहीं कर रहे, आप लोगों की मदद कर रहे हैं. और ये चीजें जबरदस्त संघर्ष पैदा करती हैं जीवन के अंदर. दिस इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोग्रेड सैटर्न इन द लग्न. इमेजिन that Saturn is retrograde in the second house. Imagine. Irrespective of sign, nakshatra, exalted, debilitation, that's a different thing. Debilitation is better, I'll tell you sometime later. Now, with this Saturn, look at the third house first. So it is 12th from which house? Third house. Third house, your prakram, siblings, communication, brothers, sisters, bua, and your new ventures, short travels. There will be always special about these things. And one suggestion I always give, if you have Saturn retrograde in the second house, is that go away from the motherland, go away from the siblings. The day you go away from the motherland, the day you go away from the siblings, you will start succeeding in your life. The success will come, at least the professional growth will come. There is a strong chance that your siblings may suffer because of this position. Your friends may suffer. You'll be so obsessed about your prakram that you will not deliver anything until and unless you have mastered that thing, until and unless you are perfect in that thing. You will keep working hard because it has gone 12th from your prakram. तो आपको अपना पराक्रम बिल्ड करने में बहुत वक्त लग जाता है. You'll keep changing things. You'll keep changing teachers, subjects. Because say, okay, I started this, I'm not perfect. I need a perfect teacher. I need a perfect boss. I need a perfect environment. I need a perfect team. And when the team is not working, teacher is not working, he said, no. If they are not working, I'll work myself. मैं अपने आप काम करता हूँ, मैं अपना पराक्रम दिखाता हूँ. और जब आप ये करते हैं तो आप चीजें बड़ी भी कर सकते हैं और अपना नुकसान भी कर सकते हैं. Because you are not stable. Something special about your parakram, not about the wealth, not about the wealth, not about the second house, not about your taste. No.
something special about third house. Try this in your chart and see something special, different, challenging about communication. That people may take your communication wrong. You will not be stable. When you want to start a new venture, you will start a new venture in a very different way, in a very unique way. You will like to master things. You would like to, you would like to be a perfectionist. आप वहां पर पहुंचना चाहेंगे. Because of which it will create a lot of frustration in your life. You will try everything. But when you try everything, वो एक कहावत है ना, जैक इन ऑल एंड मास्टर इन नन, तो उसकी फाइट बहुत रहती है इस केस में. बट इफ दैट पर्सन गेट्स स्टेबल and he focus on one thing at a time, this person can become super successful. ये सबसे बड़ा इलाज है इसका, सबसे बड़ा. आप देखिए another thing, थर्ड हाउस पे आते हैं. ठीक है, थर्ड हाउस पे अभी मैं सारे तो यहाँ पे कोशिश करूंगा बताऊंगा कि नहीं, लेकिन थर्ड हाउस में अगर सैटर्न रेट्रोग्रेड है, समथिंग इज स्पेशल अबाउट योर मदर. Either you were separated or she was separated from your father, or your mother had a strange behavior, or she just went away from your life for work. Something was special about your mother. Because this is 12th from the 4th house. Something extremely special about the comforts of your life. Maybe your grandmother who has given you so much comfort in life, but not the mother. Somewhere down the line, you will realize that you have a strange habit about cars and vehicles. You will always want, a perfect home, a perfect car, and you always expect perfect emotions from others, which is a cause of distress, and you work hard for it. 500% you will work hard for it, for the comforts of your life, for the comforts of the family, for home. Go watch in your kundli and give me the feedback. You'll come to know what I'm trying to talk about, what I'm talking right now. Another example, let's do it for Saturn in the 4th, and it is retrograde here. Now you'll say something is wrong with the 4th house. No, something is wrong with the 5th house here. Because it is 12th from the 5th, because of which you will see something is seriously wrong with your children, or something is special with your children. There's a struggle with the children, with your love. You'll have a heartbreak. Something is seriously wrong with your relationship with opposite sex. Spouse के साथ, आपकी गर्लफ्रेंड के साथ, there will be a struggle, संघर्ष, obsessive behavior. You will realize somehow आपका जो skill है उसमें आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, बिकॉज पिछले जन्म में आप सीरियस थे ही नहीं अपने स्किल के बारे में, अपने लव के बारे में, अपने बच्चों के बारे में. समथिंग स्ट्रेंज, समथिंग एक्सट्रीमली स्ट्रेंज. आप सभी घरों के बारे में करके देखिए इसको. You'll realize what I'm talking about. For an example, if you have, Saturn retrograde in 5th house, what about the 6th house? You'll have strange enemies. आपके ऐसे दुश्मन होंगे आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये इंसान, यार ये बंदा दुश्मन हो सकता है मेरा.
ये कैसी बीमारी है? यू नो, ये इतना कर्जा मेरे पे कैसे आ गया? फिफ्थ हाउस सैटर्न रेट्रोग्रेड, नो आइडिया। आपको लग रहा है फिफ्थ हाउस में प्रॉब्लम होगी, आप देखिए कि उसकी मेजर लॉसेस सिक्स्थ हाउस के वहां पर हो रहे हैं, वहां पर स्ट्रगल सिक्स्थ हाउस की हो रही है। You'll realize it. अजीब सी लिटिगेशन हो जाएगी। You were going on the road, गाड़ी के नीचे, अभी किसी ने बताया कि किसी के गाड़ी के नीचे कुत्ता आ गया, डॉग, और वो पालतू था, वो गलती भी उसकी नहीं थी, कुत्ता घर से बाहर निकला, गाड़ी आराम से आ रही थी, और एंड दे फाइल्ड अ केस, दैट पर्सन, एंड केस इज रजिस्टर्ड इन द कोर्ट। वो जमानत करा रहे थाने में जाके। कम ऑन, स्ट्रेंज। रोग शोक कर्जा ऋण बीमारी शत्रु लिटिगेशन, स्ट्रेंज थिंग्स हैपनिंग। You know, when you have the Saturn retrograde here in the sixth house, लोग बोलेंगे आपको कर्जा या पैसे के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। Forget about it, just think, आपकी एक स्ट्रेंज रिलेशनशिप वाइफ के साथ, एक स्ट्रेंज बिहेवियर विद योर स्पाउस, संघर्ष, ऑब्सेसिवनेस, बिकॉज वो पर्सनल स्पेस इन्वेड हुई है यहां पर। सेवेंथ हाउस is in trouble because of Saturn in the sixth house. Go watch your chart. Do write in the comments. You'll see that you had a wonderful relationship, but you're so obsessive about that relationship, that partnership. And it doesn't mean that you were non-serious about your rog, shok, karja, rin, bimari, shatru in the past life. You were not serious about your spouse, It is not Saturn in the seventh, Saturn in the sixth will cause troubles in relationships, partnerships, marriage. This is very deadly if you have Saturn retrograde in the seventh house. Why? Because your relationship with the extended family, if you are a female, relationship with your in-laws is going to make you work hard. वो 500% काम करवाएगा आपसे। You'll come and say कि आप बोलोगे मेरे पति के साथ तो मेरे रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरी पावर स्ट्रगल या मेरी स्ट्रगल इन लॉज के साथ बहुत ज्यादा है, एक्सट्रीम। गो वॉच इट, देखो इसको, डू राइट, कमेंट, all the eighth house things, secretive struggles आएंगी, बहुत अजीब सी एक सीक्रेट जो आप किसी को बता भी नहीं सकते। आप फंस गए हो किसी बात में, ना आप अपनी पत्नी को बता सकते हैं ना अपने पति को। Secretly you are in struggle. With Saturn in the eighth house, there is a struggle with bosses, teachers, gurus, with your spiritual life. Lot of struggle. And you want to perfect that. You want to achieve, you want to master that. और जब आप एक चीज को मास्टर करना चाहते हो तो आपके लाइफ में जबरदस्त स्ट्रगल आती है। Saturn retrograde can take you to the highest life in your career, at the highest stage in your career, but with lot of struggle, tons and tons of struggle. You are born to do bigger things in life. You're born to do serious things in life, but hey, you have to do one at a time. If you don't do one at a time, you are in a serious trouble, ladies and gentlemen. If you have at least Saturn retrograde. Saturn retrograde in the ninth house. People will have trouble with business, work.
वो तो बोले मेरे गुरु के साथ प्रॉब्लम होगी, नहीं, आपके वर्क में प्रॉब्लम होगी। इट इज 12th फ्रॉम द 10th हाउस। कितना भी काम करेंगे, बोला भाग्य मेरा साथ ही नहीं दे रहा, बहुत। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने काम में। जब आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने काम में, तो आपको यही फील होता है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा। वी हैव एक्यूरेट रेमेडीज, नक्षत्र बेस्ड रेमेडीज फॉर दिस, बट वो एक चार्ट सेंट्रिक चीज है। विल हैव टू अंडरस्टैंड द नक्षत्र एंड द पदा टू गिव यू द एग्जैक्ट रेमेडी फॉर दिस। In fact, for every placement, look at Saturn in the 10th house. लोग मुझे आके बोलेंगे, सर, I have problem with wealth. We work hard, but the wealth, the money, the liquidity, the cash, my elder brother is troubling me. There's something special about my elder brother. बोलो वो तो 10th हाउस में है, तो एल्डर ब्रदर के साथ कैसे? You go, you see, there'll be problem, there'll be something special, something unique, something different, something tormented or tormenting about your elder brother. He will behave like a tormentor. You go to 11th house. A lot of people say 11th house में क्या होगा? 11th house Saturn, something is seriously wrong with your bed pleasures, or there's something special about your bed pleasures, about your sexual life, about your sleep. People say, look at moon in the 12th house for sleep, there's problem in the... See, no, your subconscious mind is always thinking of profit, gain. Your subconscious mind is very special about hopes, wishes and desires, and this is biggest trouble. Hopes, wishes and desires जितनी ज्यादा होंगी उतनी प्रॉब्लम है। They'll be strange about your expenses. ऐसे एक्सपेंस होंगे जो आपने सोचा ही नहीं है। ये कैसा हो रहा है एक्सपेंस? ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि ऐसा एक्सपेंस भी होगा। बोलो एक्सपेंस तो 12वें भाव से है। Come on. 12th house Saturn retrograde. Something very special about your intelligence, your body, your confidence. You will easily lose your confidence. You will struggle with your body, with your mind. Something very serious about your body. Something very strange about yourself. Something very, very strange about your thought process. आपका thought process बहुत different होने वाला है. You're thinking like anything else. This is how, and the further research, ladies and gentlemen, is when you look at the nakshatra and the pada, and then you calculate the remedies. Now, what I'm going to do is, I'm going to give you another video, जहां पर मैं हर घर में शनि की कैसे रेमेडी, कार्मिक रेमेडी के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। Super strong remedy, which will give you immediate results, but wait for the next video. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं आप लोग। ऐसा ही अपना आशीर्वाद और प्यार मेरे पे बनाए रखें। आप सबको बहुत बहुत प्यार। हरे कृष्णा।